Hello friends, welcome to OB's online smart classes. Today we are going to discuss the another important topic of parts of speech, that is verb. Now in this video lecture we will discuss some important points about verb. It is only a fundamental video, so please watch and enjoy. So let's start. What is a verb? Verb, as you see, is any word that shows an action. Here it is written action. So action simply means any movement. Okay, any movement or any activity. कोई भी वर्ड जो किसी मूवमेंट या एक्टिविटी को शो करता है वो वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, these are the words which are having action. For example, eat, drink, bath, wash, run, fight, do, and many more words. Even sleep, एक्शन होता है स्लीप में भी. आई एम डूइंग माई वर्क, डू काम करना, उसमें एक्शन होगा. रन, उसमें एक्शन होगा. कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ए वर्ब. ओके, वर्ब दो तरह की होती हैं, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब? अ सेंटेंस should have a verb at least to give a complete meaning. एक सेंटेंस में वर्ब होना बहुत जरूरी है. बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते. आप एक सेंटेंस को विदाउट सब्जेक्ट लिख सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप एक सेंटेंस को लिख सकते हैं, बट नॉट विदाउट वर्ब. हाउ? By using active voice, I can use the subject. I read a book. I is the subject, read is the verb, and a book is the object. Okay, I can write the same sentence in passive voice. A book is read. Now the object is in the beginning, the verb is in the middle, and object is nowhere else. I can write a sentence without a subject and without object. If I say I read, it is a complete sentence. If I say a book is read, this is complete sentence. And in these two sentences, one thing is common. That is verb, read, and here it is read. And in the second sentence, it is read, a book is read. So in both sentences, verb is there. Even if you want to write a sentence with one word only, you can just put the verb, like optative sentences, go, and you put the full stop. That is a complete sentence. So what you learned? You can write a sentence without a subject, without object, but not without verb. Even you can write a sentence with only one word, that is verb. Go, open, come, do. Okay, so these are the verbs. Types of verbs. There are generally two types of verbs, broadly speaking: auxiliary verbs and main verbs. Okay, we talk about auxiliary and the another is main verb. Okay, now इन दोनों को जानना क्यों जरूरी है? Because when you will find some sentences, to correct the mistakes, this type of verbs will help you out there. Okay, now let us understand what is auxiliary verb. अब देखिए, वर्ब दो तरह की होती हैं, मैंने आपको बताया था. पहला, अगर हम auxiliary verb की बात करें तो ये state of being होते हैं. state of being का मतलब है होना. मैंने अभी बताया verb का मतलब होता है action. तो जो auxiliary verb होती हैं वो होती हैं state of being, और जो मेन वर्ब होती हैं वो होती हैं एक्शन. ये याद रखिए. ओके, ऑक्सिलरी स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं आई एम ए टीचर. अब मैं टीचर हूं, अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग, होना. जबकि अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं या एक टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना एक एक्शन है. सो इफ आई राइट द सेंटेंस लाइक ही इज ए गुड स्टूडेंट, here is no action. तो इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी होती है is, am, are,
was, were, do, did, has, have, had, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये सपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। He had a car, he had a car simply means had is state of being, उसके पास एक कार है. It means that it is a state of having a car, right? The another auxiliary verbs can be of two types, like helping verb and like modal verbs. Okay, my brother can solve this question. Now here it is modal verb. Modal verbs are 12 in numbers, like can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need and dare. These all are modal verbs. These all are modal verbs. For example, my brother can solve this question. So here we have modal verb can and solve is the main verb. Okay, this is a state of being and this is action verb. You should help the needy. He shall perform well in the meeting. He shall perform well in the meeting. So here shall is the modal verb and perform is the main verb, means the action verb. Okay, so let's proceed further. Now when we talk about main verbs, I have already told you that main verbs show physical or mental activity. जैसे play, eat, read, sleep, see, think, what, that is all action. When you think, there is a psychological action in your brain. Okay, so body always has an action, okay, whether it is psychological or it's physiological. दोनों तरीके से एक्शन में होती है बॉडी. अच्छा, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? मेन वर्ब होंगी. ये सारे भी एक्शन वर्ड्स मेन वर्ब होंगे. ओके, अब देखिए इसमें एक चीज, likewise we had state of being in two broad categories, auxiliary verbs and modal verbs. Similarly, main verbs can be divided into two different branches. The first is transitive and the another one is intransitive. Now ये important इसलिए है, जब भी आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस किसकी बनती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है, इंट्रांजिटिव की कभी नहीं बनती. अब देखते हैं, पहली वर्ब क्या है मेन वर्ब में? ट्रांजिटिव. सिंपली इंप्लाइज पासिंग ओवर. नाउ द वर्ब पासिस ओवर द ऑब्जेक्ट. जब भी वर्ब ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है. अब आप ये मानकर चलिए, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव ही होगा. ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं हो सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज अब्यूजिंग ओल्ड मैन. नाउ द वर्ब अब्यूजिंग इज पासिंग ओवर द ओल्ड मैन. इसका मतलब क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट हुआ. तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. अगर किसी भी वर्ब का यूज ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी. अगर मैं कहूं ही इज अब्यूजिंग and the sentence is complete. Okay, so this sentence, this verb abusing is intransitive because it has no object. तो अगर ऑब्जेक्ट है वर्ब में, वर्ब के साथ, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होगा. नाउ लेट्स सी द अनदर सेंटेंस. ही सॉ अ बिग सर्पेंट. नाउ सॉ हैज द ऑब्जेक्ट. Likewise, they are watching movie. So watching and movie is the object here. Likewise, subject is he and serpent is the object. So in both these sentences, all these three sentences, we have object, a proper object. So that is transitive verb. अब ध्यान ये रखना है कि जो पैसिव वॉइस बनेगी वो ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनेगी. Okay, so we should move
to the another type of verb, and that is intransitive. I taught you already, I have discussed that any verb that doesn't pass over, means has no object, is direct object. Any verb that has no direct object is called intransitive verb. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे मुकेश हैज अराइव्ड, अब ये सब्जेक्ट है, ये आपने देख लिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस कभी बन ही नहीं सकती, ठीक है। नाउ द अनदर सेंटेंस, मीना हैज कंप्लीटेड. Now what she has completed, there is no mentioning of that, there is no description of that, means no object. So that is also what, intransitive. Okay, now he speaks fast. Does he speak fast? Now there is no object here likewise, so it is also intransitive verb. So it's simple. Now let us see in brief types of these verbs. Okay, this image can just reflect the broad description of the verb. For example, the verb may be divided into two broad categories, auxiliary and main verbs. Auxiliary verbs can be further divided into helping verbs and modal verbs. Helping verbs are is, am, are, was, were, do, did, has, have, had, be, etc. And modal verbs are 12 in numbers. I have already told you: can, could, may, might, will, shall, should, must, ought to, need, dare, etc. And main verbs now are of two types: transitive verbs which have object, and intransitive verb no object. So this is just the basic understanding about the verb. You have to keep these some points. It means we have to think about this broad description of the verb. This will help us out in the another exercises to come, when we will have some practical problems related to verb. Thanks a lot. Now we will just see some practical exercises associated with verb. Thanks a lot. We will meet in the another class. Enjoy learning. Thank you.